हाय, दिस इज शैलजा प्रांजल फ्रॉम सिटी हॉल ब्रैम्पटन। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मिस्टर पैट्रिक ब्राउन ने और पूरी क्रिकेट टीम को बुलाया है और बहुत खुशी की बात है कि कनाडा इज़ एंटरिंग इनटू दी वर्ल्ड कप क्रिकेट। बहुत तैयारियाँ अब होंगी 2024 तक। स्टे ट्यून्ड। इसके आगे आप वीडियो में पूरी की पूरी प्रेस कवरेज देखेंगे। थैंक यू। हाय जिमी, शैलजा प्रांजल। ओके, सो ये आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्रिकेट के बारे में? व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट टुडेज इवेंट? सो बेसिकली रिसेंटली अभी कनाडा की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई है। उसके लिए ये इन्होंने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पैट्रिक ब्राउन एंड काउंसिल मेंबर्स ने हमें इनवाइट किया था टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम फॉर द क्वालिफिकेशन। तो उसी की वजह से हमने प्रेस को इनवाइट किया एंड जो कनाडा के प्लेयर्स थे सारे वो आए, मैनेजमेंट से बंदे आए थे एंड वी हैड अ गुड सेशन। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस डजंट नो कि क्रिकेट भी इतनी पॉपुलर है यहाँ पे एंड मेजॉरिटी मुझे भी आइडिया नहीं था कि कनाडा में क्रिकेट भी इतनी पॉपुलर है और उसमें मेरे ख्याल से हर बहुत डाइवर्सिटी है, हर जगह के लोग टीम में खेल रहे हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को ये भी नहीं पता कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा क्वालिफाई हो गया। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा क्वालिफाई हो गए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, हाँ जी, हाँ जी। अभी करंटली 50 ओवर का वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में। अच्छा। हमारे पास ODI स्टेटस आ गया इस साल, तो डाउन द रोड में भी हम वो भी खेलेंगे, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप। बट T20 वर्ल्ड कप इज़ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिकेट, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्मेट है एंड उसमें क्वालिफाई करना और आई होप कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान जैसे पूल्स में होते हैं ताकि जो हमारे व्यूअरशिप है उसमें भी रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़े एंड प्राउड टू बी कैनेडियन हो। हम चाहते हैं कि हमारे भी प्लेयर्स विराट कोहली के अगेंस्ट खेलें, हमारे प्लेयर्स शाहीन अफरीदी, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क, ये सब के अगेंस्ट खेलें। हम चाहते हैं ये चीज़। उसके क्या होगा कि कैनेडियन क्रिकेट जो अभी क्लब लेवल पे है या नेशनल लेवल पे यहाँ पे है, वो हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो। बाकी जो व्यूअर्स हैं इंडिया में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, वो देखेंगे कि कैनेडियन क्रिकेट भी मतलब आपको कंपटीशन दे रही है। कनाडा में जो क्रिकेट लवर्स हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसको कनाडा एक आम आदमी? हाँ जी, कि पहले तो देखो हमारे जो डिजिटल हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो करें। फेसबुक पे क्रिकेट कनाडा एंड इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल क्रिकेट कनाडा है, ट्विटर पे भी क्रिकेट कनाडा। उसको फॉलो करो। हम डेली अपना अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। और जो क्रिकेट प्रैक्टिसेस या क्रिकेट वो सारा हम मैचेस होते हैं वो वहाँ पे लाइव भी दिखते हैं? कैसे लाइव कहाँ देख सकते हैं? सोशल मीडिया पे हम लाइव मैचेस नहीं दिखाते, बट हम टाइम एंड मतलब चैनल वगैरह बता देते हैं कि कहाँ पे आएंगे। ठीक है। फिर कोई समरी आती है आपके सोशल मीडिया पे, किसी ने पूरा मिस कर दिया और समरी देखना चाहता है? पूरी समरी हम डाल देते हैं, मैच रिजल्ट्स, मिड इनिंग्स ब्रेक, टॉप परफॉर्मर्स, मैन ऑफ द मैच कौन है, इवन फॉर वुमेन क्रिकेट, फर अंडर 19। अच्छा, इन कनाडा वुमेन क्रिकेट इन कनाडा? कनाडा में वुमेन क्रिकेट भी है एंड इट्स एक छोटी सी और बात बता दीजिए, कनाडा में क्रिकेट लवर्स जो है वो अगर किसी को क्रिकेट खेलने में भी इंटरेस्ट है, तो कहाँ किसको कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे बड़े होकर क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट टीम में आना है? हाँ जी, अगर हम अकेले GTA की बात करते हैं ना, GTA में लीग्स हैं, BDCL है, ब्रैम्पटन ईटोबिको डिस्ट्रिक्ट लीग, TNDA है, TDC है, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, MCL है, और फिर BC साइड बहुत लीग्स हैं। B साइड 2 लीग्स हैं, सॉरी माय बैड। BC MCL है एंड देन अल्बर्टा में लीग्स हैं। तो अगर आप कनाडा वाइड का पूछें तो ये लीग्स को आपको रीच आउट करना पड़ेगा। लीग्स में जो क्लब्स होते हैं, क्लब्स की खुद की एकेडमी। कैसे ढूंढेंगे? गूगल करके? ये आप गूगल भी कर सकते हैं एंड क्रिकेट लीग, हाँ ये क्रिकेट लीग्स होती है लोकल, सोशल मीडिया पे भी इनके प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बच्चे जो इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बेसिकली यू कैन हैव अ पाथवे कि आप जो क्लब ओनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, ग्राउंड्स इतने ज़्यादा ग्राउंड, और ब्रैम्पटन में इतने ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट? तो वहाँ पे आप अकेडमीज का कांटेक्ट लेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से अपना इंस्टाग्राम पेज बोलेंगे? जो क्रिकेट कनाडा का पेज है वो है ऑफिशियल क्रिकेट कनाडा। एंड आप फेसबुक पे भी ऑफिशियल क्रिकेट कनाडा सर्च करें, ट्विटर पे भी क्रिकेट कनाडा। So any help you want from Cricket Canada side, like if from media point of view, to help the team for raising funds and all that, उसके लिए भी आप क्रिकेट कनाडा के पेजेस पे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Should have under 16, under 19 students program running in Canada. Are you aware that there is no such program going on? Whereas your limited
who are going to serve the cricket calendar from now on? What do you think? Well, all I'd say is you're going to get some very good news if you're a fan of junior and youth cricket. Stay tuned because there's an announcement coming later this year. And so good news on the horizon on that front. You're going to hear about before the end of this year. Thank you very much. Next question. Thank you so much. This is Paul from Canadian Pakistan Narrative. Firstly, congratulations for being such an achievement. I wanted to ask regarding the fitness level now, since you'll be participating in a big league where you'll be seeing the India, Pakistan, they have a bleed test, yo-yo test. Any fitness plans you have for the Canadian cricket team so that they could also be up to that level or anything in regards to that? I think sadly Zafar is probably in better shape than other players. Look, because they have the body fat, so our players are up for it, but over to the coach. He's the one who's going to be making them run a tough fitness regime. The training has been already started, and we are part of now Indian Sports Institute. So basically, all these players are members there. There are three locations in Ontario, one in Scarborough, Wilson, and Catherine. So Monday and Wednesday we are like a whole group together, and they have access in the other days as well. So the fitness part is one of the main, we are focusing, like you said. And next 2 months is basically with this weather where we cannot go out. The fitness will be the main focus for the next 2.5 months. Thank you so much. Okay, last question, then we're going to do a photo with the players and council and everyone else that is interested in a photo. So last question. Okay, I don't see any other questions. Oh, sorry, Hinton Chopra, Prime Asia TV. In T20 cricket, main thing is fitness. So what is the fitness level of our players? Because we can beat any team of the world if we are fit. And if fitness level you have concerns, the team management has any concern, what are the challenges that those concerns can be addressed? And Mayor Brown has a vision to take Canadian team to the next level. So what are those concerns which can be addressed and Mayor can take action on those things? So I think the fitness question's been answered, but maybe the general manager or the coach could say, what other barriers do we have for Canadian cricket? And certainly in Brampton, whatever advocacy we can do to our provincial and federal partners to get what Canadian cricket needs, we're going to push for. We already have some meetings set up with the federal government to talk about this. One barrier that we have is the weather. We are entering into the winter time, as we all know. So there's one thing called match fitness. So I think that is one thing that going forward we need to work on. We need to play a lot of games, and we know that going forward for the next couple of months, Canadian weather is not conducive of us playing cricket outdoors. So as Coach mentioned, we have already planned our schedule starting from January. We'll be heading to most likely Sri Lanka for a training tour, and then we have a series coming up in Dubai, and then a few other tours are already planned up from there. So that is something that's in line, and that is how we will address the fitness levels. Like on the tours, we'll work on the fitness and we'll work on our match practice as well along the same time. So, if you don't mind, I'd just like to add that one of the biggest barriers is finance. It's no secret, because you can Google and see, cricket gets $80,000 from the federal government per year. 90,000 monthly? 80. 80, trust me. Per year. Yeah. So, and we don't have a lot of sponsors yet. We're working with Boundaries and Others doing a good job to try and get some sponsors, and they've been doing a good job in not only that. Somebody asked earlier about the marketing. Raul and Boundaries now is putting together a plan for marketing from now to the World Cup. So there's a lot of work in that. Just one last thing. Compared to another cricketing warehouse in the funding from the financial resources. Funding for associate? Yeah. Way down. We get less than $1 million. BCCI gets $450 million. No, but I think after this qualification, how much more you are going to get? It's not a lot.
And just to know, that's where we could use your help, and you should close it with this before the photo, is I'm not sure the public realizes that cricket doesn't get the same support as other sports. I've already asked one of our local MPs to set up a meeting with the sports minister and talk about that, so we have that meeting coming up, and we're going to do that advocacy, but I hope more cities and more media outlets can say, how is it equitable that cricket doesn't get the same type of support? Certainly in Brampton, we changed that. On a local level, they get the support, but it should be the same way on a national level. So on that note, let's take the group photo. We have some people who have press schedules. And then if there's any one-on-one interviews that you want to do with the officials here, we can do so. Okay, one. Just one, I just would like to present, on behalf of the Canadian team, I would like to present the Canadian jersey to Ray Brown, and I hope and wish that he can wear this and come and support us during our World Cup campaign in June. Sorry, guys.